Today we are going to do walking on the line. ठीक है. अच्छा, इसको मैं आपको आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो. मैं एक वीडियो के जरिए बताऊंगी किस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. ठीक है, तो इट्स लाइक एक थियोरेटिकल हो गया. आज मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखाऊंगी और हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्यों व्हाई इज दिस एक्सरसाइज नेसेसरी, कि हमारी मॉन्टेसरी ने क्यों इस एक्सरसाइज को क्रिएट किया, कि दिस इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन और इससे क्या फायदा होता है. ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा गौर से सुने कि जो एक्सरसाइज जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है. मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ अपना. फ़ोन साइलेंट. तो अच्छा, नोट्स मैं इसके बाद बना लूँगी. ठीक है. नाउ द वॉकिंग ऑन द लाइन एक्टिविटी होती क्या है. इट इनवाइट्स चिल्ड्रन टू वॉक स्टेडीली. स्टेडीली का मतलब हम इसको उर्दू में कहेंगे कदम जमा कर. ठीक है, टू वॉक स्टेडीली ऑन अ लाइन by refining their balance and learning to control their movement. जब हमने वॉकिंग बिटवीन द मैट्स किया था, वॉकिंग अराउंड द मैट्स एक एक्सरसाइज की थी, याद है आपको. तो उसमें किस तरह वॉक किया था कि एक पाँव रखा, उसके आगे दूसरा पाँव रखा, फिर दूसरा पाँव, तीसरा पाँव रखा. ठीक है, इस तरह वॉक करते गए थे. एंड वी मेड श्योर कि हमारे द हैंड्स आर केप्ट टू आवर सेल्फ ओनली. इधर उधर नहीं हो रहे हैं, किसी को टच नहीं कर रहे हैं. एंड देन व्हाइल वी आर वॉकिंग अराउंड द मैट, जिसके तरफ में कोई और मैट नहीं था, सो वहाँ पे वी हैड आवर फीट साइड बाय साइड. ठीक है, and even then we made sure that our hands are kept to ourselves only. So walking on the line activity जो है, ये activity this it can be done from a very early age. इसके लिए जो मतलब कि इस एक्टिविटी के बाद आप बच्चों को, इसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी, उसके बाद आप वॉकिंग अराउंड द मैट्स करवा सकते हैं. ठीक है, दिस इज अ स्पेशल एक्सरसाइज. इट डजंट बिलोंग टू एनी ग्रुप. ये किसी ग्रुप में नहीं है, स्पेशल ग्रुप में आता है ये. ठीक है. So walking on the line में क्या होता है कि the children they walk steadily, refining their balance, and they learn to control their movements. Usually how we do it, we usually मतलब जो इसका usual presentation है, it's in a large ellipse. Ellipse, you know, like an oval, but oval में एक side ज़्यादा bulging होती है और एक X shape में होता है ना. ellipse में क्या होता है कि both the sides are like this. ठीक है, और जो सामने है they are like parallel. So we make a large ellipse on the floor with the tape, and about like 1 inch उसका इतना आप उसकी वो रख सकते हैं width. And children they concentrate on placing their feet on the center of the tape, and they might and they one foot behind the other. Okay, and this usually start with your right foot, then the left foot, then the right foot, and the left foot. Now the size of the ellipse in a classroom depends upon the space available, but advisable क्या है कि जैसे 1 meter area should be enough. Now this exercise is not necessarily done on ellipse only. Ellipse इसलिए की जाती है क्योंकि there are no corners. ठीक है, the most difficult part for a child to cross are the corners. ठीक है, ellipse is a continuous motion है, and all the steps are taken in a similar fashion. ठीक है, they are जहाँ curve हो रहा है, slightly curve हो रहा है, and the child is going around the line. Whereas अगर हम or shape रखते हैं like a square or rectangle, so what happens is that if a child, ठीक है, जो initial exercise है, it might be possible that the child does it very finely, but due to the corners, when a child उसकी जब
extensions करेंगे, like carrying objects, which we're going to talk about. So the child might feel difficulty in shifting his position. ठीक है? All clear till now? I cannot जी hear. Everything clear? yes yes ma'am. Now we talk about the benefit. अब अच्छा, now Maria Montessori, she observed, like हमने पहले पढ़ा था कि she's a doctor as well. So she observed that children, they like to walk, like if there's a footpath, they would just walk on the edge of the footpath. Okay, and if there is a line drawn, so what happens is that they tend to follow that line. So when she observed that the children, they are moving around the lines as well, but their movements are not coordinated, they might fall off, they might hit others. So this led her to make an exercise that allows the children to move gracefully with more controlled and coordinated movements. Okay? And she also observed that if opportunity is given to the children to control their movement graciously, then it's like they move around. It's like they develop a perfect equilibrium. Equilibrium balance कहते हैं, ठीक है? They develop a perfect equilibrium and they move around gracefully. Okay. Now, now walking on the line is not doesn't fall in any group. यानी कि self care में भी नहीं आती है, care of environment में भी नहीं आता है, elementary में भी नहीं आता है, preliminary में भी नहीं आता है. It is like a special exercise, and it starts from 2.5 years of age. Now walking on the अच्छा, now 2.5 years of age कौन सी एज होती है? जब बच्चे का सेंसिटिव पीरियड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट काम कर रहा होता है. सेंसिटिव पीरियड ऑफ मूवमेंट काम कर रहा होता है बच्चे का 2.5 years of age में. देन वी गिव दिस एक्सरसाइज. तो ये एक्सरसाइज जो ना उनकी नीड को मज़ीद सेटिस्फाई करती है. इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज जहाँ पे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होती है, alignment of spine, because when they are going to we're going to talk about कि किस तरह they pick up different objects and they move on the line, and the thing is that they cannot move out of the line. So it helps align the spine, because if they're carrying more than one object or even one object, तो जहाँ पे like if they have to hold their hand like either like this, ठीक है, or मतलब ऐसे they have to carry something in their hand and they have to move. Now if they fold the spine, you move होगा, ऐसे move होगा, the thing will fall down. So this exercise also helps alignment of the spine, develops good poise. Poise means कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो मॉडल्स वॉक करती है, दे वॉक विद ग्रेट पॉइज, हम उसको पॉइज कहते हैं. मतलब they walk very elegantly and with great body control. Even they're wearing high heels, but the way they are walking, it's like they're मतलब बहुत mesmerizing तरीका होता है, बड़े जबरदस्त तरीके से walk करते हैं आदमी. So that is called poise. So this exercise refines muscular coordination. Muscular coordination because यहाँ fine motor skills नहीं, यहाँ fine motor movement, ठीक है, fine motor movement जिसमें hand की grip है, and the gross motor movement जहाँ पे legs काम कर रहे हैं. The child has to make a presence of mind that this doesn't, the thing in his hand doesn't fall, and his feet doesn't taper off from the tape जो भी material for the line हमने use किया है, ठीक है. So it refines muscular coordination, helps align the spine, develops good poise and body control, and also gives the cognitive development. as क्यों cognitive development क्यों होती है? क्योंकि the child first exercise क्या हो रही है कि बच्चा walk कर रहा है line में, ठीक है, but still he has this in his mind that he doesn't have to move
he will not move away from the line. बहुत concentrate करके अपने movements को control करके जो है वो body position के साथ in relation अपनी movements को body position के साथ वो लेके move कर रहा है around the line. ठीक है? Then, as they walk on the line, children often gain the sense of harmony and relaxation in response to the combination. Now, as they walk along the line, they when they're walking along the line, they have a sense of achievement. A sense of achievement that they have done something, they have completed their activity. एक तो ये चीज होती है. Then they have this sense of relaxation. Okay. अच्छा अब when is the right time to invite a child to walk on the line? हम कैसे कर सकते हैं कि if you see a child अब काम कर रहा है and now the child is getting a bit distracted, ठीक है? You call that child, let's walk around the line. ठीक है? If a child has finished his work, then also you can call the child to walk around the line, because walk around the line जो है वो सिर्फ not only mind is at work but also body. तो mind और body का बहुत जबरदस्त combination होता है walking around the line. ठीक है? Then children are invited to participate in walking on the line, but then in all Montessori exercises जो आपने देखी है, so have you ever noticed that we never force a child? Yes. हमने हर जगह पे we have always taken consent of the child. Would you like to join this? Would you like to carry this? Would you like to do this? And चलो practical life में देखा जाए, everyday life में, if you do this and the child refuses, no, if for everything no. So what you're going to do is you're going to observe the child कि उसको कौन सी activity पसंद आ रही है. What does he wants to do? Now, whatever he wants to do, you are going to turn that activity into a presentation and ask the child, would you like to do this activity? तो क्या उसे क्या होगा कि वो उसकी एक्टिविटी उसकी कंसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है? ओके. देन this activity also gives the children an opportunity to learn directions. A child is walking on the line, curve ले रहा है, ठीक है? The child turning towards right. When the child is walking over here, the child turning towards left. So उसको direction मिल रही है. और direction के साथ में special awareness कहते हैं, spatial awareness कि walk कर सब अच्छा. Now it's not necessary that we take only one child. हम usually group of children लेते हैं, ठीक है? एक ग्रुप लेते हैं बच्चों का, 4, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे हम लेते हैं. Reason being is when children are walking, ठीक है? अब उसके हाथ में कोई चीज है, या फिर वो वॉक भी कर रहा है, making sure his both feet are on the line. So वो देख रहे हैं कि हाँ there's a child in front of me, so the child is going to slow down his pace. अपनी pace, अपना जो चलने का है ना, वो उसको थोड़ा slow down कर देगा. That is called spatial awareness. Special नहीं कह रही हूँ, spatial, SPATIAL, spatial awareness होती है कि हम अपनी किस तरह मूव करते हैं in a crowd of people के हमें कोई टच ना करे and we don't touch anybody else. So that is called spatial awareness. अच्छा ये group, this exercise is also counted as a lesson in grace, courtesy. जैसे कि
मैंने आपको बताया कि child is carrying something from one end of the circle to the मतलब start से कर रहा है going around that circle or whatever space you have marked for the child, and coming back to the end तो क्या हो रहा है, the child is not touching anything, the child उसके हाथ से वो चीज गिरना नहीं चाहिए, or he is not touching anybody else, he's not bumping into anybody else. So this is also a very good lesson for grace and courtesy exercises. Okay, then इसमें एक वेरिएशन ये हो सकती है कि जैसे एलिप्स बनाया है, ठीक है, सो द टीचर अब आप टीचर ने ये नोट किया, she observed since मॉन्टेसरी जो है वो हमारे मिक्स्ड एजेस है, ठीक है, मिक्स्ड एज ग्रुप्स हमारे होते हैं इसमें, जिसमें 2.5 साल के बच्चे से लेके 6 years तक जो है ना the child in a typical Montessori stage economic system. So she the teachers they can observe, they must observe, they might observe कि कुछ बच्चे जो बहुत तेज वॉक कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो स्लो वॉक कर रहे हैं, it might happen कि जो है वो elder बच्चे like 4 plus they are walking a bit fast, and the children who are like 2.5 3.5 plus they are walking a bit slow. So the teacher can tape another line, a smaller circle, a smaller ellipse inside the bigger ellipse, and then children can walk easily in the smaller area में, और जो bigger है वो बच्चे अपने करें. Now you can make a heading of guidelines कि हम what does a teacher makes sure. Now we can say they are points of interest भी हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन they are guidelines. A point of interest पे हम बात करेंगे, they might be similar point of interest भी होंगे, लेकिन अभी हम guideline में वो बात करते हैं कि when children are walking, तो आपने ये करना है, group of children जो walk कर रहे हैं, they are on the same page. Like they are doing exercise 1. If one is doing exercise 1, all of them are doing exercise 1. If one other child is on exercise 2, so similar group exercise 2 वाले आने, ठीक है. Then the children they should be an arm's length, यानी कि ऐसे हाथ करके. And if we can relate, जब हम स्कूल में वॉक कर रहे होते हैं तो हम ऐसे हाथ रख के वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है. अब देखो स्कूल में वॉक कर रहे होते हैं तो वी कीप आर्म डिस्टेंस कहते हैं, वी कीप आवर आर्म्स ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस. लेकिन Montessori method we don't keep our hands like this. It's like it's just an imaginary distance in the mind of a teacher that the children they are going to be in a distance, in this much distance between each other. Okay, but unconsciously the teacher is training the child to walk with an arm length distance, but don't keep the arm like this. Then if a child is not interested in walking, but you want the child to observe, so you must ask the child to sit in a designated area, any area that you might think कि हाँ यहाँ पे there are no exercise, मतलब वहाँ पे कोई shelf नहीं, कुछ नहीं है, nothing, it's over there, you can let the children sit over there who doesn't want to participate, but you want as a teacher for them to observe. Now if since we have spoken about one arm distance होना चाहिए ना, if more and more, because see variations बताएंगे आपको, मैं आपको variants से बताऊंगा, so you are going to find out that there are lots of interesting activities in this walk on the line also. So children when they see others, they tend to get interested and they want to join them, but since if there is not enough room between children, so you're going to make them wait in a designated area that you have to wait for your turn. In this way, you're teaching the children how to wait for the turn also. Okay, so this was
अभी जो था that was just an overview of walking on the line, and you have to write a short note on this, on जो मैंने आपको बताया, एक short note लिखना है सिर्फ, ठीक है? Okay, now when we come to the walking on the line, अब material पे आ जाते हैं. Now material you can. मैम आपका कैमरा स्टक हुआ हुआ है, प्लीज. हालांकि आज तो मैं वाईफाई के बिल्कुल सामने बैठी हूँ. अब सही है? नहीं मैम, वीडियो को ऑन ऑफ करके देखें, शायद चले. स्टक हुआ हुआ है बिल्कुल. अब सही हुआ? अब नहीं मैम, ब्लैंक हो गया है पूरा. दोनों को ऐसे ही लग रहा है. मैम हुमा तो है ही नहीं, वो उनकी लीव हो गई है. मीटिंग क्या हुआ है? हाँ, हुमा नहीं है. अच्छा, मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मैं बोले जा रही थी तो मैं देखा ही नहीं. लेट मी चेक विद हुमा. मैं जरा ऐसे मैसेज कर देती हूँ. यस मैम. और आपका अभी बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. अपना बैकग्राउंड ना आप है. हुमा पूछ रही है सेशन एंड हो गया है क्या? अरे, अच्छा, मटेरियल इसमें होगा टेप, जो हम लाइन उसमें बनाएंगे, ठीक है? इट कैन बी अ स्कॉच टेप. स्कॉच टेप, कलरफुल टेप हो सकता है. यू कैन टेक chalk also. chalk भी हो सकता है if the environment doesn't have, is not carpeted, so you can also use a chalk, colorful chalk ले सकते हैं, ठीक है? So it's basically a line, an ellipsoid line, ठीक है? Then a hand held flag, एक छोटा फ्लैग होगा. A bell on a string, a small glass of water, a basket and a candle. ठीक है? ये मटेरियल है, पर यू कैन हैव डिफरेंट मटेरियल ऑल्सो. ये वो मटेरियल है, जब बच्चे ने ये सारे मटेरियल कर लिया ना, तो दैट मीन्स द चाइल्ड कैन डू एनी विद एनी मटेरियल. Okay, done, written. यस मैम. Now this activity initially will be done without music, but you can play music after the children have, like, after you introduce this activity, ठीक है? तो आप बैकग्राउंड में calming music आप प्ले कर सकते हैं. यूजुअली हम उन बच्चों को लेते हैं, this exercise is the first exercises that can be done with the children who are 2.5 years, ठीक है? But the handheld flag है, a bell on a string, a small glass of water, a basket, a candle. ये वाली मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. वाली मैम मुझे आ रही है. थोड़ा सा बीच में साउंड कुछ हो रही थी, लेकिन वॉइस तो आ रही है. अच्छा, ठीक है. तो इसकी इनिशियल फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें वॉकिंग अराउंड द लाइन विदाउट होल्डिंग एनीथिंग, वो हम 2.5 पे करते हैं. लेकिन जब हम बच्चों को व्हेन दे हैव लाइक डेवलप अ बिट कंसंट्रेशन डेवलप होने लगती है और वो डिफरेंट मटेरियल पे काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ एलिमेंट्री एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो 3+ पे हम उनको मुख्तलिफ वो मटेरियल जैसे कि फ्लैग है, बेल है, कैंडल है, ग्लास ऑफ वाटर, बास्केट, तो फिर हम ये मटेरियल का इंट्रोड्यूस करवाते हैं. अच्छा, नाउ डायरेक्ट एम इसका क्या होगा? मैम वॉकिंग की तरफ स्ट्रांगली उनको करना होगा एनहेंस. डायरेक्ट एम जो है, हाँ बिल्कुल वॉकिंग की तरफ. अगर मतलब इसका जो डायरेक्ट एम है वो है कि द चाइल्ड इज वॉकिंग अराउंड द लाइन.
ठीक है, विद हम कह सकते हैं विद गुड वॉइस, with calmly and steadily, to walk calmly and steadily. Walking on the line जो है मतलब इसका जो डायरेक्ट एम है वो ये है to walk calmly and steadily. Indirect Steadily. steadily, ठीक है, steadily मतलब बैलेंस वॉकिंग. अच्छा, अब इसका इनडायरेक्ट एम क्या होगा? मैम सॉरी, वो मैं सिर्फ इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 9 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी. कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे. ओके ओके. ठीक है, अच्छा तो अब इनडायरेक्ट एम क्या होगा? मैम लार्ज मोटर मूवमेंट्स. हम लार्ज मोटर मूवमेंट, देखो लार्ज मोटर मूवमेंट की जब बात आती है ना तो दैट मीन्स हम बहुत पाँव को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. ठीक है, इट्स नॉट ओनली वॉकिंग. वॉकिंग तो बच्चा वॉक करता हुआ एनवायरमेंट में आता है. लार्ज मोटर मूवमेंट्स वहां यूज होते हैं वर्ड जहाँ किकिंग, हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग वाला आ जाता है. ठीक है, इधर वी आर नॉट जंपिंग, वॉक, हम वॉक कर रहे हैं तो हमारे क्या होगा? आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होगा, चाइल्ड्स मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होगा. हैंड तो यूज नहीं हो रहा, नहीं ऐसा नहीं. इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है ना, कि वो अपने पाँव को कंट्रोल कर रहा है कि वो लाइन पे एक क्यों है. ठीक है, फर्स्ट राइट लेग यहाँ, राइट फुट यहाँ है तो लेफ्ट फुट का जो टो है दैट इज टचिंग द हील ऑफ द राइट फुट. ठीक है, दिस इज हाउ द चाइल्ड इज वॉकिंग, ऐसे. मैम अगेन आपका 5 मिनट से कैमरा भी स्टक हुआ है, हुमा भी चली गई. ये कुछ एक साथ हो रहा है गड़बड़ नेट का. मैम उनकी मीटिंग जो है वो लीव होती है और आपका कैमरा स्टॉप होता है, कुछ होता है एकदम से नेट में. अच्छा इट्स ओके, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. शी कैन सी द रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग ही देख सकती हैं वो. लिख देती हूँ कि मैम अपना कैमरा भी जरा मैम प्लीज ऑन ऑफ करें, हो सकता है फिर चल जाए. ठीक है. मैम यू आर नॉट विजिबल. अच्छा मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज क्लियर है. ठीक है, अच्छा चलें. इनडायरेक्ट एम में है टू डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मूवमेंट. ठीक है, एंड देन टू रिफाइन a balanced movement, to develop concentration. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप चलाऊंगी ये दिखाने के बच्चे मतलब किस तरह हम इसको. Just see how this teacher is going to work. ठीक है, on the line. अच्छा now another one I want to show. एक और मैं आपको शो करती हूँ. ये नजर आ रहा है? यस मैम आ रहा है नजर.
Now, this is just an example how an ellipse is like, and आपका तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है? This is according to a home environment, but this is how Acharya is going to work. This is how they learn. Right? पहले उसने खुद work किया, then with the glass of water, and then with the glass of water on a tray. See? This is the indirect aim: concentration, balance, coordination. So this is how children are going to practice now. Okay, now for the details. Let me do this. Okay. अच्छा ना, इसके आपने मटेरियल लिख लिया, डायरेक्ट एम, इनडायरेक्ट एम लिख लिया, प्रेजेंटेशन लिखेंगे कि यू इनवाइट चिल्ड्रन टू द लाइन, would you like to come and join me and walk around the line? Okay, then you are going to show the children and the children are going to follow. So how you're going to show? First you're going to place your whole foot on the line, heel first, and walk slowly along the line. Okay. Later you can show the children how to place their heel right against the toe of the other foot for each step. Now, second point is that you're going to encourage the children to walk slowly and carefully on the line, keeping. अच्छा, अब हमने first presentation में देखा था that lady, she was walking a bit fast. Since there were no kids, it was just for monitoring, मतलब movie clip बनने के लिए. But when you have kids following you, so you make sure that you walk very slowly, one foot behind the other, one foot behind the other, so that you don't get off the line. ठीक है, आपने लाइन पे चलना है. लेकिन बच्चे, अब आपने मेरे बच्चों का एग्जांपल दिखाया, एक मैंने आपको वीडियो दिखाई जिस तरह एडल्ट वॉक कर रहा था, एक मैंने वीडियो दिखाई जिसमें बच्चा वॉक कर रहा था. So this is how children are going to walk, कि वो लाइन पे पाँव इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, but they are eventually going to learn. Yes, ma'am. Okay. After they मैम have, हमें कौन सा फॉलो करना होगा, वो स्क्वायर वाला या राउंड वाला ही करेंगे ना हम पहले? राउंड वाला क्योंकि विदाउट एज, ellipse वाला. वाला, यस, जिसमें कोई एंड नहीं होता. ठीक है. Okay. Then later on you can encourage, you can play background music like very soft music and invite the children to continue the activity. ठीक है. Okay. Then ओके मैम. okay, now अब इसको extension, you can make a heading of extensions. ठीक है, extensions हो गई. अच्छा, now first वाला जो move, first exercise है जिसमें without any music, children were they are going to move around the line one step behind the other. ठीक है. Now second जो extension है वो है, you will play the music and you will tell the children, when you hear the music you're going to move, and when the music stops, they can sit down wherever they are. ठीक है. And then with equal, and make sure that they don't come near each other. आप टीचर ने जिस डिस्टेंस से खड़ा किया उस डिस्टेंस से they are going to move as soon as it's just like वो हमें गेम खेलते हैं ना चेयर वाला,
ठीक है, लेकिन उसमें दे आर ऑलवेज रनिंग एंड रनिंग. यस मैम, म्यूजिकल चेयर जो होता है. But this is with great poise and with एक बहुत like with coordinated movements. ठीक है, this is the step 2. Now step 3. Step 3 होगा walking on the line while carrying a hand flag or a bell. मैम जो आप स्टेप्स ये 1 और 2 और 3 बता रही हैं, ये हम एक्सटेंशंस में स्टेप 1 स्टेप 2 करके 3 करके लिखना है. अच्छा, एक्सटेंशन में अब पहला फर्स्ट जो अब सेकंड स्टेप मैंने बताया, इसको कम कर दें. अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 में हम जो है वो म्यूजिक के साथ आएगा. फर्स्ट इनिशियल प्रेजेंटेशन है where the children are walking without music. ठीक है, सेकंड वाला जो होगा, you are going to play the music and you are going to tell the children as soon as the music stops you will sit down wherever you are. ठीक है, so it's like let it be a game as well as an exercise teaching the children to walk with coordinated balanced movements. Now extension में हम क्यों करते हैं? हम extension करते हैं ताकि जो है वो बच्चों में challenges improve हो, challenge इंटरेस्ट आया उनको. इंटरेस्ट है. एग्जैक्टली, वरना तो फिर दे आर गोइंग टू लूज. यानी कि अब हमारे जैसे मिसाल आप देखें कि पहले बच्चा एबीसीडी लिखता है, देन मोर चैलेंजिंग हम उसको 2 लेटर वर्ड्स देते हैं, देन 3 लेटर वर्ड एंड देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स रीडिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग. तो इसी तरह हम चैलेंजेस बढ़ाते हैं, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा. ठीक है, नाउ जो फर्स्ट स्टेप था, मतलब फर्स्ट एक्सटेंशन जो है म्यूजिक वाली है. सेकंड एक्सटेंशन जो है वो है walking on the line while carrying a flag or a bell. Now the flag should not fall down and the bell should not ring. ठीक है, सही मैम, जबरदस्त. the bell should not ring and उसका हाथ ऐसे होना चाहिए. The hand should be like this. The hand should be like this. ठीक है, now the third object was candle. मतलब third candle. Now the candle should not blow out. The flame should not flicker. जब स्लो मूवमेंट होगी तो फ्लेम विल नॉट फ्लिकर, वो बुझने नहीं लगेगा, वो वैसे ही रहेगा. बट मेक श्योर द फैन इज ऑफ. ठीक है, नाउ वी कम टुवर्ड्स स्टेप 3. Step 3 is carrying 2 different objects. Okay, अच्छा. Then comes another step. Step 4 आता है जिसमें carrying something on your head. अच्छा, वो फ्लैग किया था, बेल किया था, एंड देन देयर वाज अ बास्केट रह गया था, बास्केट एंड ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल हम हमारे बढ़ते जाते हैं. फर्स्ट डिफिकल्टी लेवल था जैसे म्यूजिक प्ले हो रही थी, the child has to walk listening to the music. ठीक है, अपनी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कर रहा था म्यूजिक के साथ. देन you can still have the music playing. ठीक है, आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं विद द फ्लैग के साथ मूव कर रहा है. as soon as the music stops the child has to sit down. Similarly with the bell, the child has to sit down. Now इसमें मजीद डिफिकल्टी आ गई. The child has to sit down without ringing the bell. Then comes a glass of water.
जिसमें बच्चे the children they are going to have glass of water and they're going to move around the line. अच्छा, the point to be noted is that there should be equal distance between the children. Then there comes the basket, जिसमें basket वो first time basket carry करेगा, second time basket can be on top of the head also, and then you can put different material in the baskets. ठीक है? यस मैम, ठीक है। Okay, क्यों, क्या हुआ? मैम मैं ये सोच रही हूँ कि एक्सटेंशंस में आप जो सारी चीजें बता रही हैं तो इनका डायग्राम भी बनाना होगा। नहीं, सिर्फ नोट्स, ये पूरा नोट्स होगा, सिर्फ आपने एक एलिप्स बनाना है, दैट्स इट। एलिप्स बनाना है और उसमें बस फुट मूवमेंट्स दिखाने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छा, नाउ कंट्रोल ऑफ एरर क्या होगा इसका? मैम कौन सा वाले का? अभी आपने इतनी सारी बताई, अब आप नहीं उनमें से हम इतनी किसका सारी नहीं, इसकी मेन तो वही है ना, वॉकिंग ऑन द लाइन है। कंट्रोल ऑफ एरर क्या होगा? द कंट्रोल ऑफ एरर, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या हुआ कि द चाइल्ड, बल्कि सारी एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ एरर एक हम सम अप कर सकते हैं कि द चाइल्ड डजंट मूव अवे फ्रॉम द लाइन। यस, और इक्वल डिस्टेंस भी होगा। हाँ, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस भी होगा, डजंट मूव अवे फ्रॉम द लाइन एंड नन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल डाउन। एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मैम एक फुट स्टेप के बाद दूसरा फुट स्टेप करके उसको कंप्लीट करना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? टू स्टे ऑन द लाइन, to stay on the line, maintain equal distances. ओके। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो है वो अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका, आप फीट ऑन द लाइन ये भी लिख सकते हैं, कीपिंग योरसेल्फ बैलेंस, डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। और कंट्रोल ऑफ एरर में आप सिर्फ एक सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है वही कंट्रोल ऑफ एरर है। यू मूव अवे फ्रॉम द लाइन, आपको वो पर्पस खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है मैम। बस फिर एज ग्रुप मैम? 2.5 ऑनवर्ड्स। यस मैम। अच्छा, अब इसका ग्रुपिंग में हम स्पेशल एक्सरसाइज बोलते हैं। इसका कोई ग्रुप नहीं ठीक है, इट्स अ स्पेशल एक्सरसाइज, दैट्स इट, इट डजंट हैव एनी ग्रुप, क्योंकि ग्रुप वो होता है जिसमें मोर देन वन एक्सरसाइज होती है, ऐसी कोई और एक्सरसाइज है नहीं, तो हम वी जस्ट से दिस इज अ स्पेशल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ओके मैम। ठीक है, तो बस यही हमारा पूरा घंटा हो गया। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टूड कि हमारी जो वॉकिंग ऑन द लाइन कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, जिसको हम इसी तरह फॉलो करेंगे तो वी गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। ठीक है मैम। ओके, और मैम आपने जो शॉर्ट नोट इस पे लिखने के लिए कहा है वो जर्नल लेक्चर्स में ही आएगा? इसके साथ ही आएगा वो, आप इंट्रोडक्शन टू वॉकिंग ऑन द लाइन लिखने के बाद उसके बाद जो एक्सरसाइज हम होगी इसके साथ, दोनों साथ साथ आएंगे। ठीक है मैम। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। ओके मैम, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।